webinars by which really you all will get the good opportunity to develop yourself, and actually you will able to see a lot of difference in yourself. So we also have seen the same thing in us, and we also wanted to see the same thing in all of you, sir. So today we'll start with, like we know, like in our society currently, if you see, like so many people are there, so many students, and we see a lot of a lot of people, like they are doing so many endeavors. The purpose behind all these endeavors is to is to get succeed in their life, right? Everyone is after success, and they want to be on the top somewhere else in their life, right? And to like impress others, or to achieve some big thing in their life. But while doing all these things, sometimes what happens, that people, they forget about the maintaining the relationships with their equals, or maintaining the relationships with their natives, or their friends, whomever they are like currently associating with. So they forget about that thing, and what happens, the people, they got the success, but ultimately what happens, they get at the top, but there is no one with them, and then again they start feeling alone, or lonely feeling, that okay, I got this particular success, but what has happened, that there is no one with me during that entire journey. People were there, but I did not spend time with them. And now what has happened, I have succeeded in my life, but there is no one with me, and they start feeling lonely. So that thing actually, it happens if the people, they don't pay attention towards relationship. Okay. So we see that some people, especially in corporate, currently I'm there, and I'm just working, like I have experience of one year only. But many stories when I hear about like a lot of my seniors, that yes, they are really at the top. Their package is like maybe like around 80 lakhs or 90 lakhs per year. But what happens is that they have succeeded, but still, because there is no one with them, or we can say that they're lacking somewhere in maintaining the relationships. And when the person really starts feeling lonely now, then you know what happens, he starts taking shelter of some different kind of things. Like sometimes for person, he starts taking shelter of some intoxicant things, maybe it may be drinking, or it may be smoking, because they feel that okay, I'm really lonely and no one is with me. And so what is the ultimate solace for me? So they go for, they run after such kind of things. So even it can take us to such kind of limit also, if the relationships is are not maintained properly. So this is one thing. Again, there are some people, I will just tell that there are some people, they are so poor that they only have money with them. There are some people, they are so poor that they have only money with them, because they feel that like the money is everything, and the money is the ultimate happiness, and it can award the person everything. But it is not like that. What is real richness? Anyone knows here in this assembly? Anyone knows what is real richness? किसको बोल सकते हम कि ये व्यक्ति आमिर है? Yes, anyone? Okay. Yes. The man who is happy Okay, the man who is happy. Very good. or satisfied. Yeah, satisfaction, both things are important, happiness and satisfaction. Yes. So in one sense we can say that actual person can be rich when he's happy, and along with that, yeah. Yes, you can comment also, like if you can like mention in chat box also. Okay. So what I heard today is that real richness means what, when a person drops a tear, and then how many people actually come to wipe it. That is actually called as the, like the real richness of that person, because he has given his time to many people, and that's why he has developed the relationship with many people. And that's why today whatever is going to happen in his life, the other people with whom he is associating, they are going to come to resolve that problem. And that is what we also feel that real richness is all about. So such people, they are never alone in their life, they are always surrounding with many people nowadays. Means they are always surrounding with many people, and that's why they never feel lonely, and they always feel some kind of nourishment. Like sometimes you might be feeling that initially there were families, and there were joint families. In joint families, what is to happen, that the small, if suppose any small children, if there are some small children, then what, like all
family members were there, and they used to give love to that small children, and in this way that children were getting nourishment. But nowadays what is happening, we see that there are no joint families. Like nowadays only in one family we see that hardly 4 members are there, सिर्फ 4 लोग रहते हैं, सही है. So what happens is that sometimes if both husband and the wife, if they both are going for work, and if they're not giving sufficient amount of time with the children, then we see that again this children starts feeling lonely, and again they starts feeling that hopeless kind of thing in their life, and again they go for various things, and gradually sometimes it is the scientific observation also that such kind of students, they become the victim of bad habits. They starts developing some kind of bad habits, they start taking shelter of such kind of things, and ultimately like they suffers in their future. So that is the thing that we should see, that even in our family life also that thing is very important again. But along with this, one more thing now we need to think, we need to see that especially when we are associating with the people, it is not so very easy, it is not very easy to deal with the people. Means like we see that everyone is having their own psychophysical nature. Like we say that sometimes अगर किसी को यहाँ पे सिस्टर होगा या मे बी आपको ब्रदर होगा, तो आप देखते हो बहुत बार कि आपका चॉइस और आपके ब्रदर का चॉइस या मे बी सिस्टर का चॉइस हर बार सेम नहीं आता, राइट. कभी आपको एक चीज पसंद आती है, आपको आईपीएल की एक टीम पसंद आएगी, मे बी आपके सिस्टर या ब्रदर को कौन से अलग टीम पसंद आती है, राइट. So generally these things goes on, and like we know that this psychophysical nature is different, and because of that thing a lot of clashes happens in between. But if that clashes they are happening, and if we are also continuing with that, like we are also continuing with the argument, अगर दो व्यक्ति के बीच में कौन सा आर्गुमेंट हो रहा है कि कोई बोल रहा है कि मुझे ए पसंद है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है मुझे ए पसंद है, और अगर दोनों जस्ट उसी वे में जा रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, तू तेरा रख ले मैं मेरा रख लूं, सो इन दिस वे व्हाट विल हैपन कि वो जो दो लोग हैं वो एक दूसरे से एकदम दूर जाएंगे, वो कभी पास में नहीं आएंगे, एंड इन दिस वे अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि again there is no relationship we will see. So in like I will give one scriptural example in this regard, like you know like Krishna, you might have heard about it, and Pandavas. So जब भी कृष्ण, भगवान कृष्ण जब भी आते थे ना ये पांडवस के साथ मिलने के लिए, तो क्या होता था कि भगवान कृष्ण जो भी पांडवस थे 5, किसको पता है पांडव कौन कौन थे, किसी को पता है पूरे 5 पांडव? Yes, you can comment also chat box. ओके अर्जुन था, ओके और कौन थे? भीम. या भीम वाज देयर, यस 2 हो गए. ओके नकुल आ गया, ओके और कौन था? यस सहदेव. सहदेव. सहदेव, एंड वन मोर इज युधिष्ठिर. या युधिष्ठिर, यस वेरी गुड. सो दीज आर लाइक 5 पांडवस. सो क्या होता था, यस क्या होता था कि लाइक जब भी भगवान कृष्ण इन पांडवों से मिलने को आते थे ना, तो जो युधिष्ठिर महाराज और भीम जो बड़े थे, तो उनको भगवान कृष्ण क्या करते थे, ऑफर करते थे उनका प्रणाम. जब वो अर्जुन से मिलते थे तब उनको वो एम्ब्रेस करते थे, मतलब लाइक उनको जाके मिलते थे एज अ फ्रेंड. और जब वो नकुल और सहदेव से मिलते थे तब नकुल और सहदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम करते थे. तो इस तरीके से हम देखते कि भगवान कृष्ण हर एक को अलग अलग लेवल पे रिस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं, और जब ये रिस्पेक्ट ऑफर किया जाता है अलग अलग लेवल पे, that is also that is also the sign of that relationship, that the people are having the relationship amongst them. Now we are discussing here, like अभी तक हमने डिस्कस किया कि लाइक जब भी प्रॉपर रिलेशनशिप और प्रॉपर नरिशमेंट व्यक्ति को नहीं मिलता, तो कैसे वो अलग अलग तरीके का मे बी शेल्टर लेता है लाइफ में. मैंने कुछ बैड हैबिट्स के बारे में बताया, या मे बी पर्सन कभी कभी इंटॉक्सिकेशन का, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग, इन सब का भी शिकार हो जाता है. सो ये सब चीजें क्यों होती है? बिकॉज देर आर नॉट प्रॉपर रिलेशनशिप एंड देर इज प्रॉपर नॉट प्रॉपर नरिशमेंट टू दैट पर्सन. ओके, तो अभी हम देखेंगे ये सब किसकी वजह से होता है. व्हाट इज दैट लाइक द मेन ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉट हैविंग द प्रॉपर रिलेशनशिप. सो अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज दैट द बिगेस्ट एनिमी ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर रिलेशनशिप, देन दैट एनिमी इज व्हाट, अवर ईगो. सो किसी को पता है ईगो क्या होता है? व्हाट इज दैट ईगो? अहंकार जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है वो? हम देख सकते हैं क्या हम हमारे आंखों से उस ईगो को या अहंकार को? यस, एनीवन? No. Okay, we cannot see first thing.
एक तो इसका मतलब क्या कि वो फिजिकल चीज नहीं है, जैसे हम हर एक चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं बट ईगो को हम देख नहीं सकते, तो इसका मतलब वो फिजिकल चीज नहीं है, तो क्या है, दैट इज सबटल थिंग, यस वी कैन फील इट, ओके वी कैन फील इट, यस नाइस ट्राई. So basically ego means what, like in our sessions that you are attending that sessions na on Sunday, personality development sessions, तो उसमें आपने सुना होगा कि there is one gross body and there is one subtle body. सबटल बॉडी मतलब क्या रहता है कि जिसमें माइंड, फॉल्सिको और इंटेलिजेंस होता है, आपने सुना होगा बुद्धि रहता है, मन रहता है और अहंकार रहता है. सो ये तीन चीजें होती है, कौन कौन सी, बुद्धि, मन और अहंकार. तो इसमें जो अहंकार है ना, ये जो सोचता है हमेशा मैं ऐसा हूँ और मेरे पास इतना सब कुछ है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है. अगर कोई व्यक्ति बार बार सिर्फ इन चीजों के बारे में अगर वो बात करता है कि मेरे पास इन सब 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 चीजें है, तो हम इमिजिएटली समझ में आ जाता है कि उसके अंदर बहुत अहंकार छुपा है. और ऐसे व्यक्ति के पास ना हमेशा बहुत कम चांसेस रहते हैं कि बाकी के लोग उसके साथ एसोसिएट करते हैं या बाकी के लोग उसको टाइम देंगे, बिकॉज हमेशा हम लाइक मान लो कुछ फ्रेंड साथ में आए और अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उन सब में अगर एक उसमें से एक उनका भी फ्रेंड रहेगा, अगर लेकिन बाद में खुद के बारे में बोलेगा मैं ऐसा हूँ, मेरे पापा दुबई से जाके आए और मेरे घर में ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है, तो बाकी के लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बार बार सिर्फ अपने बारे में ही बात करता रहता है. तो ऐसे व्यक्ति से क्या होता है पता है क्या आपको, बाकी के जो व्यक्ति रहते हैं वो दूर होने लगते हैं और ऐसा जो व्यक्ति है वो अकेला पड़ जाता है. तो इसलिए जो अहंकार रहता है हमारे अंदर, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है. अगर हमारे रिलेशनशिप्स बाकी व्यक्ति के साथ डेवलप नहीं हो रहे, तो इसका बड़ा शत्रु हमारा ये अहंकार है. सो ऐसे जो लोग रहते हैं अहंकारी लोग, इन लोगों को एजुकेट करना कि बहुत डिफिकल्ट होता है. जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, जैसे आपने देखे होंगे आपके क्लास में कुछ टॉपर्स और मे बी आप में से भी कोई टॉपर्स होंगे, बट कुछ लोग आप देखते कि क्लास में और मे भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत होशियार रहते हैं. और अगर मान लो गलती से कभी उनको उस सब्जेक्ट का एक प्रिंसिपल समझ में नहीं आता और अगर मान लो दूसरा वाला व्यक्ति उनको हेल्प कर रहा है, तो बहुत बार उनको डिफिकल्टी जाता है कि ये मुझे कैसे समझा सकता है, आई एम द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, how can this fellow can teach me this particular thing, I am the greatest, like they feel like that. And really it creates the problem actually, that when the person feels that oh I know about this, I know about that, and such people they are never ready to learn the new things, and in this way actually what happens, they again creates the problem for themselves. Also such people, ये जो अहंकारी लोग रहते हैं और क्या है कि they are always in themselves, they are always like as I mentioned you earlier that always thinking about themselves, and again they always talk about I and mine, and in this way actually these people they create the problem for themselves. So अभी तक हमने क्या देखा, एक कि हमने देखा कि रिलेशनशिप को मतलब अच्छा क्यों नहीं होता, और बाद में हमने देखा कि रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एनिमी कौन सा है, अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा एनिमी कौन सा है, ये दो चीजें हमने देखी. अभी इनके ऊपर हम सॉल्यूशंस देखेंगे. तीसरा चीज वो क्या रहेगा कि अलग अलग हम सॉल्यूशंस देखें, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर कल्टिवेटिंग relationships and as well as how to have this cooperation. तो उससे पहले हम जस्ट शॉर्ट में देखते हैं कि इन सब की जरूरत क्या है. आपको लगता है कि रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, I think that the relationships and this cooperation is very important for. Okay, it's important. Yeah, good. Thank you. Yeah, again, visual is there saying yes, it is important. सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है अगर हमें लाइफ में अच्छे से परफेक्ट बनना है, हम लाइफ में हमारे जिंदगी में अच्छे से एडवांस भी करना है और अच्छे से अगर हमें हमारे जीवन में एक बोलते हैं ना हमें एक्चुअली सक्सेसफुल बनना है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है. बिकॉज आप अगर सिर्फ अकेले ही आगे जा रहे हो और बाकी के साथ जैसे मैंने बोला कि सक्सेसफुल हो रहे हो, बट इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप्स, देन व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन, वी डिस्कस अबाउट दैट.
Now there are three principles which we are going to see about this कि ये जो principles है ये हमें help करेंगे, किसके लिए help करेंगे, ये relationship and cooperation develop करने के लिए हमें help करेंगे. So what are these principles? The first one is law of choice. So law of choice मतलब क्या कि हम सबके पास एक choice है. तो कौन सा choice है वो कि aspiring for the higher thing and compromising on the lower thing. मतलब क्या कि जो भी अच्छी चीजें है ना उनके लिए हमेशा एस्पायर करना जिंदगी में, और जो छोटी छोटी चीजें है ना उनको हमेशा बाजू में रखना. So that this principle is very important. Like I will just share a small story with you. Like once what happens, 16-year-old boy, he just goes to his father and he tells father that father, I wanted to marry with girl. And because father knows that the boy's age is only 16, so father says, hey fool, what you are talking about? Is this your age to marry right now? What will happen? What the society will think? And he directly starts saying that, like, means to the to that son that okay, don't speak like such kind of things and say sorry. But yeah, because student, that particular son, because he was not that much mature and he did not have that knowledge of that when the person will get married and all these things. He was just teenager boy and he just not like that. So that boy was not getting anything. Okay, why to say sorry? Actually, my father, although my father is pushing me to say sorry, but that boy was not getting. But ultimately, if that boy wanted to keep the relationship with his father, then what he must do? What do you think? He must say sorry or not to his father? अगर उस बच्चे को अपने पिता के साथ अच्छे से रिलेशनशिप रखना है तो उसको क्या करना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? Yes. बोलना चाहिए. Yeah, speak ideally. That is most important. Otherwise, what will happen? कि एक छोटी सी चीज के लिए उन दोनों का रिलेशनशिप और खराब हो सकता है, राइट? सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कभी कभी हम देखते हैं हमारी जिंदगी में कि कभी कभी हमें लगता है कि हम सही है, मैं जो सोच रहा था वो बात सही था, मैं नहीं सोच रहा था या मेरी जो बहन सोच रही थी दैट वाज एग्जैक्टली रॉन्ग. देन मैं क्यों सॉरी बोलूं उसको जाके? या मेरे में भी मम्मी पापा ने एक ऐसा डिसीजन लिया होगा कि दैट माइट बी नॉट गुड फॉर मी. देन इन सच एट सच टाइम दिस क्वेश्चन कम्स टू मी, अरे मैं इतना सच सही तरीके से सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग एनीथिंग एंड माय पर्सपेक्टिव वाज राइट. एंड अगेन आई नो वेरी नाइसली दैट मे बी उनका डिसीजन गलत था या मेरे बहन का या मेरे भाई का किसी का अगर डिसीजन गलत था, then why I should say sorry? But that time we should say sorry because we wanted to keep our that bonding or that relationship with our relatives or with our friends. So and in such times we have to apply this principle. What is principle? Choice. Aspiring for that higher thing. And what is that higher thing? Higher thing is maintaining the relationship. What we are going to compromise there? We are compromising who is right and who is wrong. हम क्या compromise कर रहे हैं तो वहां पे कि कौन सही था और कौन गलत था, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बट हम किसकी तरफ ध्यान दे रहे कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगेन वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव दैट अगर मान लो कौन सी रिवर है और अगर वो फ्लो कर रही है और माउंटेन्स आ रहे हैं, अगर वो रिवर माउंटेन्स को बोलती है ओ पहाड़ साइड को हट जाओ मुझे आगे जाना है, साइड को हट जाओ मुझे आगे जाना है, एक तो पहाड़ कभी साइड में हिलेगा नहीं. और अगर इन दोनों में ऐसा बहस चलता रहा ना तो रिवर जो है कभी समुद्र को जाके मिलेगी नहीं, क्योंकि रिवर कुछ बोलती नहीं पहाड़ को, बट वो अपना रास्ता खुद ढूंढती है. एंड इन दिस वे एक्चुअली ही रीचेस द ओशन और ही रीचेस द सी एंड ही गेट्स अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. सो एक्चुअली वी आल्सो हैव टू सी दैट अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में वो हमसे ठीक से नहीं बर्ताव कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन निकाल के आगे जाना है, बट इसका मतलब उसके साथ बहस नहीं करते बैठना है बाद में. Okay, now we'll go towards our next principle, that is law of investment. तो हमने आप सबका बैंक अकाउंट होगा, आई होप अभी आप फर्स्ट ईयर में है, आपको कॉलेज में आके में भी पहले नहीं होगा तो अभी है. सो
क्या होता है कि लाइक जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब एक्चुअली वो उससे हम फिर से बाहर निकाल भी सकते हैं। अगर अकाउंट में मेरे मनी नहीं रहेगा तो मैं एटीएम से कुछ निकाल ही नहीं पाऊंगा ना। अकाउंट में मेरे अगर 0 मनी है, 0 रुपीज है, तो मैं बाहर भी कुछ नहीं निकाल पाऊंगा, राइट। सो इसीलिए जब तक हम किसी व्यक्ति में कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, जब तक हम उस व्यक्ति में कौन सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक उससे कुछ आउटपुट नहीं आएगा। और इसलिए हमें उस व्यक्ति के साथ और उस व्यक्ति में कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ तो आदान प्रदान उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए, तभी हमारा उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप अच्छे से डेवलप हो सकता है, उसके साथ अच्छे से हमारा कोऑपरेशन हो सकता है। सो व्हाट इज दैट इन्वेस्टमेंट? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट वी शुड इन्वेस्ट इन द पीपल? क्या लगता है आप सभी को? Trust. Okay, trust. Yeah, very nice answer. Yes. Any other? Very good answer. Love. Love. Affection. Yeah, very nice. Affection. Very good. Again. Yeah, very nice answer. All these answers. Okay, forgiveness. Yes, whenever we are committing any mistake or whenever we, as we heard in like last example only that मान लो हमारी गलती भी नहीं, but भी कभी-कभी हमें forgiveness मांगना चाहिए। And that it is not like जब भी हम forgiveness मांगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को नीचा दिखा रहे हैं, but इसका मतलब ये होता है कि हम रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू करते हैं, कौन सही और कौन गलत से। ओके, तो मैं जो क्वेश्चन पूछा था आप सबने बहुत अच्छा आंसर दिया उसका। लव, ट्रस्ट, वी कैन इन्वेस्ट दैट इन द पीपल। और जब भी किसी व्यक्ति को लगता है ना कि ये व्यक्ति बहुत, यस, कोऑपरेशन, अगेन वेरी नाइस आंसर। सो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ये पर्सन बहुत ट्रस्टवर्दी है ना, तो आप देखो आपकी जिंदगी में अगर आपके ऊपर किसी को ट्रस्ट है ना, मतलब जैसे लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि यस, पोलाइटनेस, अगेन गुड आंसर। सो अगर मैं देखता हूँ कि यार किसी और व्यक्ति को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो हमेशा वो मेरी साइड लेगा। मतलब कौन से भी मैं अगर सिचुएशन में अटक जाऊंगा तो भी तो व्यक्ति क्या करेगा, मेरा साइड लेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, वो ऐसा चीज कर ही नहीं सकता। जनरली हमारे माता पिता को हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है, और जब भी मान लो हमारे हमसे कुछ गलती भी हो जाती है, वो हमारी बाजू लेते हैं और हमें बोल, वो मैं भी उस वक्त उस सिचुएशन में आके बोलते हैं डायरेक्टली कि नो, आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट ऑन माई children. And in this way, like because we have to become that trustworthy. So one more thing we can invest in the people is the time, because nowadays we see that the life has become so busy. People are always busy in so many their personal things, especially social media is like sometimes it's good that social media if you use in the right way, but if you are just spending time unnecessarily on the social media na, then our lot of time goes into that, and then again we started feeling lonely, because on Facebook, on Insta, we are having that friends, but there's such kind of friends that they hardly some of them will come in the time of urgency. Like some students, we see that they're having almost 2000, 3000, 4000 friends on the Facebook, but when there is urgency or when there is necessity, hardly few of them will come, and we have to actually we can maintain our such kind of things there, but as well as we should have some very close associates with us, some very close friends with whom we can also associate directly. So we have to start developing such kind of friends who like जिनको हमारे ऊपर भी trust है and हमें भी उनके ऊपर trust है, such kind of friends. So we have to invest some time with them, and when we are investing time, even with like in our family, we see that we have to spend our time. Like अभी आपका college physically भी start हो रहा है, मैंने सुना, तो जब भी आप यहाँ पे आओगे, I think so whenever you are coming here, you have to spend time with again your parents. यहाँ पे आके आपको बहुत सारे friends मिलने वाले हैं, but जब आपको फ्रेंड्स मिलेंगे तो अपने मम्मी पापा को भी भूलना नहीं, तो उनको भी हम जैसे कॉल करके उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जैसा हम टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों के बीच में वो जो बॉन्डिंग रहता है लोग का, वो और अच्छे से इंक्रीज हो जाता है। तीसरा और एक प्रिंसिपल देखेंगे कि जिससे हमारे रिलेशनशिप और अच्छे से डेवलप हो सकता है, दैट इज द लॉ ऑफ लेंस। सो लॉ ऑफ लेंस, और लाइक आपको पता है दिस इज स्पेक्टेकल्स, एंड अगेन देयर आर लेंस दैट पीपल वियर द लेंस। सो लेंस और लॉ क्या है, तो ये क्या बताता है कि हम जिस कलर के लेंस पहनते हैं ना, उस कलर की दुनिया हमें दिखती है। तो इसीलिए अगर मान लो लाइक किसी व्यक्ति के नाक के ये जो नोज है, और इस नोज के यहाँ पे अगर मान लो कुछ ऐसा लगा है, कुछ चीज की जिसका बहुत अलग स्मेल आ रहा है, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा,
अरे यहाँ पे कुछ तो अलग स्मेल आ रहा है, बहुत गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे। और फिर बाहर जाएगा बोलेगा अरे यहाँ पर भी गंदी बदबू आई है। और फिर और दूसरे रूम में जाएगा वो बोलेगा यहाँ पर भी गंदी बदबू है। अरे यार कुछ तो आप लोगों ने कुछ तो डाल दिया यहाँ पे कि जिसकी वजह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। बट उसको उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उसके नाक के यहाँ पे कुछ तो लगा है, राइट। yes, attitude, yeah, I was trying to say about that thing only कि हम व्यक्ति को कौन से तरीके से देखते हैं, that is very important. How we see others or how we see other people in our life, that is very important. Because sometimes what happens कि जैसे हम होते हैं ना वैसे हम दुनिया को देखते हैं। जैसे फॉल्ट्स हमारे अंदर रहेंगे उस हिसाब से हम दुनिया को देखेंगे। दिस वन प्रिंसिपल वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो हमारे अंदर जितने भी फॉल्ट्स रहते हैं ना वही फॉल्ट्स हम दूसरों के अंदर भी देखते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी ग्रेजुअली वी हैव टू स्टार्ट दैट हमारे जो अंदर जो गलत चीजें हैं हमें उनको भी कम कम करना है। और दूसरों के अंदर ये जो चीजें हैं जो मैं बोल रहा था कि फॉल्ट्स वगैरह फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, सो वो जो टेंडेंसी है हमारी वो हमें धीरे 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 कम करनी है। अगर हम लोगों के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती है हर एक व्यक्ति के अंदर, बट अगर हम उसके अंदर की अच्छाई को देखेंगे ना तो आप देख पाओगे कि आपका उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप और में भी जो स्नेह रहता है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड बिकॉज नाउ यू ऑल आर लाइक लीडर्स ऑफ दिस क्लब स्टूडेंट वेलफेयर क्लब विजडम आई क्लब। And it's like really you all are very responsible. It shows that you all very responsible, and that's why you all have getting this special training. And I really think so that it will be very helpful for you, and it will really help you in especially in future. Right now you may be feeling that okay, how much time it will take for like becoming like my maybe my like mentor or like here Shubha is there. So very they're like very powerful leaders as we know, and our whole team is there, and we also know how perfect they are there in their life because they manages both their studies as well as the programs which they are arranging for all of you. And again some of them are working also, like I'm also currently working along with me. There are some more alumni, they are also working. So they are managing all these things and still they are so perfect in everything now. It has happened because they were very consistent in attending such kind of programs. And this is again very good opportunity for all of you that you all are getting very special treatment by this club. इससे पहले इतना कभी हुआ नहीं था, but yeah, I am seeing very nice thing here, some kind of good initiative which club has taken, and you all are getting good opportunity. So take benefit of this opportunity. So really if you want to become the successful leader in our life now, then these things are very important, this relationships and the cooperation. So in our today's talk, I focus mainly on the relationship, maybe on about cooperation. We will discuss later on because I did not focus more on the cooperation. But this relationship is again very important factor. And as an organization, अगर कौन सा भी organization है उसको successful होना है, so उस organization में ये relationship factor बहुत important होता है. Because अगर हम देखेंगे जैसे लाइक मान लो हमारा एक खुद का शरीर है, और एक खुद के शरीर में अगर मेरे हाथ में अगर कौन सा गुलाब जामुन आता है, सपोज एक स्वीट आता है मेरे हाथ में, मान लेते गुलाब जामुन मेरे हाथ में, अगर मेरा ये हाथ सोचेगा कि मुझे एंजॉय करना है तो मैं ये अगर सोचता है कि मैं मुंह में नहीं डालूंगा, मैं खुद एंजॉय करने का ट्राई करूंगा, तो ये मेरा हाथ एंजॉय कर पाएगा क्या? सिर्फ वो गुलाब जामुन खा वो अगर सोच रहा है कि वो खा के मे बी सेटिस्फाई हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्या लगता है आपको? अगर मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गन सोचता रहेगा नहीं 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 एक जो चीज है ये जो पर्टिकुलर स्वीट है, आई विल पर्सनली ट्राई एंड आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। सो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति सोचेगा तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट जब तक हम जो फूड है हमारे हाथ में या जो वॉट एवर स्वीट इज देयर इन अवर हैंड, जब तक हो वो हम अंदर मुंह में नहीं डालते और जब तक वो पेट में नहीं जाता तब तक किसी को भी नरिशमेंट नहीं मिलने वाला है, राइट? सो इन दिस वे एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड this cooperation relationship is very important, actually one of the very important factor. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है और उसको अच्छे से आगे जाना है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, एंड वी दैट्स व्हाई वी ऑल शुड फोकस ऑन दिस थिंग. सो like this week we are covering this topic of relationship. Maybe in next week we will cover some different topics. Shubhaya will let you know about all these things. Okay, so thank you very much. I will stop today here only. So I just wanted to know that if any one of you are having any question, you can directly ask or you can mention in the chat box.
Till then, I would like to thank. You can comment the questions if you have. Till then, I would like to thank Abhishek. I call Abhishek Bhaiya. You can call Abhishek sir. So I would like to thank Abhishek Bhaiya because he was my senior when I was in first year. Was in fourth year. So like that. So one thing I know is leadership is walk the talk. So I am seeing Bhaiya. He's very much what he has said now na, in this 30 minutes. He is basically applying that in his life. That's why that thing is coming with that conviction. We should also try to follow it. And I hope you like the particular discourse today. Kindly comment L in the comment box if you have liked this, and I will able to. Okay, Ujjwal, thank you very much. Ujjwal is giving a thumbs up. Thank you very much, Shivtej, Bhavesh, through. Okay, so and do you have any doubt? So if you don't have any doubt, so we'll stop here, guys.